हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो एज यू ऑल नो, हम यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 6 इज़ व्हाट ट्रायंगल्स। ओके, तो जहाँ तक इस एक्सरसाइज की बात है, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। तो इसके आगे जो क्वेश्चंस है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम क्या कहता है। नाउ से अब देख लीजिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमसे कह रहा है इन फिगर 6.19 डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई दिस इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं तो मेक श्योर कि आपकी टेक्स्ट आपके सामने है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में किस तरह से प्रोसीड करना है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। सो इट इज इन फिगर 6.19 DE is parallel to AC. DE, it is parallel to what? It is parallel to AC and DF. And DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. So prove that. We are being asked to prove that. Prove that this BF by FE, BF by FE, this is equal to BE divided by EC. Okay, now see this is question number 4 and here we are being given figure 6.19 and in this figure we have DE, it is parallel to AC. Okay, D is parallel to AC, DF it is parallel to AE and we are being asked to prove this. Okay, now see let's first of all make this figure and accordingly we will come to the solution. Okay, so the solution will be, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे and the figure it is given in your text. So first of all let's make it. So it is triangle ABC actually here. So we have figure like this. This is triangle ABC. Okay, now in this triangle we have this DE, it is parallel to AC. So DE and DE is somehow like it, DE. Okay, so this is D and this D it is parallel to AC and we have DF. DF is parallel to what? AE, means AE will be joined here. First of all let us join this AE, so it will be like this and we have DF which is parallel to AE, so DF will be somehow like this. Okay, so this is the complete figure for this question number 4 and we have to use this figure, we have to use this information to prove this, that is BF by FE is equal to what? BE by EC. Okay, कैसे प्रूव करेंगे? अब देख लीजिए, जहां तक इस वाली कंडीशन की बात है, here it is asking that DE is parallel to AC. Now try to have a look over this. DE it is parallel to what? AC. Okay, once DE is parallel to AC, this means that we may consider the triangle ABC and in this triangle ABC we can use this basic proportionality theorem. Okay, तो basic proportionality theorem हमें अप्लाई करनी है। Similarly जब हम बात करते हैं ये वाली कंडीशन की, this is DF and it is parallel to AE. Now try to have a look over there. So DF it is parallel to AE. Where it may help you? देखिए जब हम यहाँ पर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ABE. Okay, so in this triangle ABE we have DF which is parallel to AE. So we have a line which is parallel to the one side, so we may use here basic proportionality theorem again, है ना। तो हम इन दो ट्रायंगल्स में जाएंगे, वहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो ये रुके रिजल्ट है ये आपको प्रूव हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ओके, मैं यहाँ पर कंप्लीट ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ये जो यहाँ पर होल ट्रायंगल है मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ एंड
in this whole triangle I may use this. D is parallel to AC. Now see, DE, it is parallel to what? AC. Once D is parallel to AC, this means that this D, it will divide AB and BC in the same ratio as per the basic proportionality theorem is concerned. So directly apply that. So we may write here in triangle ABC, since DE, okay, DE, it is parallel. D is parallel to what? AC. D is parallel to AC. तो हम लिखेंगे therefore by basic proportionality theorem we have, बताइए भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको यहाँ पर क्या देगी? देखिए DE it is parallel to AC. This means D will divide AB and BC in the same ratio. Means you will get here BD divided by DA. Okay, that will be equal to BE divided by EC. Okay, so we may write here BD divided by DA. This will be equal to BE divided by EC. Okay, let that be for example first. तो यहाँ पर आपको BE by EC मिल रहा है, देखिए, and we need this, है ना. तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट रखेंगे. अब देख लीजिए, ये तो मैंने यूज किया D is parallel to AC, सो इसको हमने यूज किया, वहां पर हमने ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई की, एंड अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग दिस. ओके, now what we need to do here is this, that we will consider this statement now. So it is DF, it is parallel to AE. DF, it is parallel to AE. Okay, once it is parallel to AE, this means that in triangle ABE, okay, this DF, it will divide what? AB and BE in the same ratio. Now वही हम यहाँ पर लिखेंगे. तो हम लिखेंगे यहाँ पे also in triangle what? ABE. Also in triangle ABE, comma, since DF it is parallel to what? AE, है ना. तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. हम लिखेंगे therefore by basic proportionality theorem we have what? Simply this DF, it will divide AB and BE in the same ratio, because this is what the basic proportionality theorem tells us, है ना. So यहाँ पर हम लिखेंगे this BD divided by DA, this will be equal to BF divided by FE. So this is equal to BF divided by FE. Okay, let this be for example second. Now try to have a look over first and second. This is our first and this is second. Is there anything common? Yes, there is. देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास यहाँ पर है फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज कंप्लीटली सेम. दिस इज BD by DA, this is BD by DA. This means we can compare first and second and we will get our required result. Okay, तो हम लिख सकते हैं on comparing first and second, on comparing equations first and second, comma, we get what? We get simply this BE by EC, BE divided by EC, that will be equal to BF divided by FE, BF divided by FE. Okay, so this was our required result and we have proved it. So we have proved BF by FE, BF by FE, this is equal to BE divided by EC. So it is that. Okay, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एज ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, यहाँ पर हम एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कन्वर्स पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. तो आप इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना. सो लेट मी रब इट. Now see, this is question number 5 and we have been given here figure 6.20, and in this figure we have D, it is parallel to OQ, DF is parallel to OR. So we have been asked to show that EF is parallel to QR. Okay, so let's come to the solution. This is the solution, and first of all let's make this figure. So figure is given here. The figure is somehow like this. It is triangle PQR here. So we have triangle this PQR, and in this triangle PQR we have for example point O here somehow, and this has been joined with this PQ and R, so it is somehow like this. So this is here O. Okay, and we have DE. D,
it is parallel to OQ. So D is parallel to OQ means it is somehow like this. So it is here D, and this is here what, E. So D it is parallel to OQ, and DF it is parallel to OR. DF is parallel to OR. So DF will be something like this. Since it is parallel, so we will take it somehow like this. So this is, for example, DF, and this DF it is parallel to OR. Okay. So we are being asked to show that EF is parallel to QR. This EF it should be parallel to QR. So EF, where is EF? So EF will be like this. Okay. So this is the complete figure, and we have to prove, we have to show that this EF it is parallel to what, QR, है ना. कैसे प्रूव करेंगे भाई? देखिए हम यहाँ पर यही जो हमारे पास कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशंस हम यूज़ करेंगे. तो इन कंडीशंस को यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ये रिज़ल्ट है ये अकॉर्डिंगली आपको प्रूव हो जाएगा, है ना. कैसे यूज़ करेंगे आप देख लीजिए. सॉल्यूशन D it is parallel to OQ. Now see, DE it is parallel to OQ. So where it may help you, कहाँ पर आपको ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट जो है हेल्प कर सकता है. देखिए अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ट्रायंगल POQ, so we may say that in this triangle POQ we have a line which is parallel to the one side, okay, and the line is DE. Okay, we have been given that this DE it is parallel to OQ. और ये जो हमारे पास है D पैरेलल टू OQ, ये इसके अलावा आप किसी भी ट्रायंगल में आपको ये हेल्प नहीं करेगा. ठीक है, अगर आपको इससे कुछ फायदा चाहिए तब आपको डेफिनेटली यहाँ पर जाना है किस ट्रायंगल में, POQ. ओके, सो इन ट्रायंगल POQ वी हैव D इट इज पैरेलल टू व्हाट, OQ. दिस मीन्स दैट दिस D इट विल डिवाइड व्हाट, PQ and PO in the same ratio as per the basic proportionality theorem is concerned. Okay, so directly apply that. So we will write here in triangle POQ, comma, since what? Since this DE it is parallel to OQ. Since DE it is parallel to what? OQ. Once it is parallel to OQ, this means we may just apply here what? Basic proportionality theorem. हम लिखेंगे therefore by basic proportionality theorem, basic proportionality theorem, we have what? We have this PE divided by EQ. This will be equal to PD divided by DO. So we have this P, okay, P over what? P over EQ. This will be equal to PD divided by DO. Let that be first. Okay, अब देख लीजिए हमारे पास जो इसके बाद कंडीशन है, द कंडीशन इज दिस, DF it is parallel to OR. DF parallel to what? OR. This means we will consider the triangle what? POR. Okay, and we will use basic proportionality theorem there, है ना. So we will write here also in triangle what? POR, comma, since हमारे पास यहाँ पर जो DF है, DF it is parallel to what? OR. Okay, since DF it is parallel to OR, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो वी विल राइट हियर देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम we have what? We have simply this PD divided by DO. PD divided by DO, that will be equal to what? PF divided by FR. So we will be having this PD divided by DO. This will be equal to here PF divided by FR. So let that be for example second. Okay, आप देख लीजिए आपको क्या करना है, कंपेयर कीजिए फर्स्ट और सेकंड को. इज देयर एनी रेशियो कॉमन? यस देयर इज, and the common ratio is this PD divided by DO. Now see PD by DO. So we may say on comparing first and second, जब हम first और second को यहाँ पर compare करेंगे, so we may say that PE by EQ, this is called what? PF by FR. Okay, so first of all we will write here on comparing first and second, या हम लिखेंगे on comparing equations first and second, comma, we get, क्या मिलेगा? We get simply this PE by EQ. So we get this PE by EQ. This is equal to here PF by FR.
PF divided by FR. Now what is this? PE by EQ, this is called PF by FR. Now try to have a look over the figure. So it is PE by EQ. Okay, this is equal to PF divided by FR. What does that mean? So does not this mean that this EF, line EF, it divides PQ and PR in the same ratio? Okay, once it is true, then we may say that this EF, it will be parallel to the third side of the triangle, and the third side of the triangle is what? QR. So we may directly say that EF, it is parallel to QR. So we will get this EF, it is parallel to QR as per the converse part of BPT is concerned. ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं which implies, इसके बाद हम लिखेंगे which implies EF is parallel to what? Q, और यहाँ पर लिखेंगे हम by converse part of basic proportionality theorem. This is true by converse part of, this is basic, this is proportionality, and this is theorem. We simply write BPT, that's basic proportionality theorem. Okay, so this was question number 5. So now let's move to question number 6. ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर इसको नोट करना चाहेंगे आप नोट कीजिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें फिगर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है ना. तो सबसे पहले फिगर को बनाइए, फिगर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कीजिए. आप ये देखिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें किस ट्रायंगल में ले जा रहा है. वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही अप्लाई कर सकते हो. जब आप अप्लाई करते हो तो अकॉर्डिंगली जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो है अपना रिजल्ट मिलता है ना. तो आप इसको नोट कीजिए, हम यहाँ पर आप करेंगे. एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Now see, this is question number 6, and here we are being given figure 6.21. Okay, and we are being asked that A, B, and C are points on OP, OQ, and OR respectively. Okay, means A is a point on OP, B is a point on OQ, and C, it is a point on OR. Okay, say that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, and we are being asked to show that BC is parallel to QR. Okay, तो सबसे पहले फिगर को बनाएंगे. फिगर को बनाने के बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हम हमारी फिगर में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि भाई ये जो हमारे पास रिजल्ट है तो ये जो है ये कम्प्लीटली वहाँ पे प्रूव हो जाएगा, है ना. तो सबसे पहले फिगर को बनाएंगे. देखिए फिगर जो मेरे पास है, हियर इट इज अगेन ट्रायंगल PQR. सो लेट्स मेक इट. So this is here PQR. Okay, triangle PQR. ABC are points on this, this, and this. Okay, O, and point O is here. Point O is, for example, here. So we have this, like this is OP, and this will become here OQ, and this one is what? OR. Okay. Now see, A is a point on OP. So for example, here's point A. Okay, this is A. And B is a point on OQ. So B, let this for example B be here. So this is B, and C is a point on OR. Let for example C be here. Okay, so this is C. Now these points, they are such that this AB is parallel to PQ. Now join this AB. So AB, it is parallel to what? AB is parallel to PQ, and this AC is parallel to what? PR. Where is AC? So this is AC. It is parallel to what? PR. And you are being asked to show that this BC, it is parallel to QR. Okay, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट फिगर है और हमें इसको प्रूव करना है ना. तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ये काफ़ी सिंपल है. हम जाएंगे, देखिए AB, it is parallel to PQ. AB, it is parallel to PQ. If we consider the triangle OPQ, ओके, वहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना. तो सिमिलरली उसके बाद देख लीजिए, AC is parallel to PR. AC, it is parallel to PR. This means we will consider the triangle what? OPR. ओके, वहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे. वहाँ पर देख लीजिए, वो जो दो इक्वेशंस बनेंगे उनका एक रेशो कॉमन होगा, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल्स यहाँ पर है जिनमें मैं यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करता हूँ, इन दो ट्रायंगल्स का एक साइड कॉमन है ना. दिस OP is common side, and this common side actually helps you in proving this result, that is this BC is parallel to QR. ओके, तो हम देखिए सोल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे. सो लेट्स मूव टू सोल्यूशन नाउ. हम लिखेंगे, देखिए ये हम यूज़ करेंगे AB parallel to PQ.
AB parallel PQ. Okay, this means let's consider triangle what? OPQ. हम लिखेंगे in triangle OPQ AB it is parallel to what? AB is parallel to PQ. AB is parallel to what? PQ. Okay, so means we have a triangle where we have a line which is parallel to its one side, so we may apply basic proportionality theorem. So in triangle OPQ, AB is parallel to PQ. हम लिख सकते हैं therefore by basic proportionality theorem, we have, है ना, डायरेक्टली हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड दिस विल गिव यू दैट, देखिए दिस विल गिव यू OA डिवाइडेड बाय AP, OA by AP, this will be equal to what? OB by BQ. So this will be equal to OB divided by BQ. Okay, let that be first. Okay, now we will use this. AC is parallel to PR. AC parallel to what? PR. This means consider triangle what? OPR, है ना. हम लिखेंगे similarly, या हम लिख सकते हैं also in triangle OPR, comma AC it is parallel to what? AC is parallel to PR, है ना. हम लिखेंगे therefore by basic proportionality theorem we have what? यहाँ पर भी हमारे पास जो ये line AC है, this will divide OP and OR in the same ratio. Okay, this means we will have this OA divided by AP, this will be equal to OC divided by CR. So let that be second. Okay, now see first and second. Here we will have one ratio definitely common, and see here we have OA by AP, here is this OA divided by AP, और ये जो कॉमन रेशियो यहाँ पर है ये तो मतलब आना ही था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल्स है, जो दो ट्रायंगल में यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, इनका डेफिनेटली यहाँ पर एक साइड कॉमन है एंड द साइड इज OP. ओके, और ये जो कॉमन साइड है, यही कॉमन साइड एक्चुअली यहाँ पर आपको ये कॉमन रेशियो दे रहा है OA by AP. ओके, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं और हमें यहाँ पर जो है हमारा रुक के रिजल्ट मिल जाएगा. तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, अगेन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा. So we will get this, we get OB divided by BQ, OB by BQ, this will be equal to OC by CR. So OC divided by CR. जरा देखिए ये क्या मिल रहा है हमें, देख लीजिए OB by BQ, OB by BQ, this is equal to OC by CR. What does that mean? That means in triangle OQR, in triangle what? OQR, BC divides OQ and OR in the same ratio, है ना. It divides them in the same ratio, so we may say that this BC it will be parallel to the third side of the triangle. This means that this BC it will be parallel to QR. Okay, as per the converse part of BPT is concerned. Okay, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं which implies this BC it is parallel to what? QR, and this was what we were being asked to prove, BC parallel to QR. Okay, यहाँ पर हम reason लिखेंगे by converse of basic proportionality theorem. Okay dears, so this is question number 6. Here we have completed it. So let's move to question number 7 now. तो आप इसको यहाँ पर नोट कीजिए अगर आप नोट करना चाहेंगे तो. So let's rub it. Now see, this is question number 7, and question number 7 it is asking that using theorem 6.1. तो आपको यहाँ पर theorem 6.1 यूज करनी है, and theorem 6.1 is what? It is basic proportionality theorem. Okay, so using theorem 6.1, using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. Okay, this is what is said by the questionnaire. So यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल एक है. ओके, एंड इन दिस ट्रायंगल यू आर कंसिडरिंग ए लाइन. आप एक यहाँ पर एक लाइन एक ले रहे हो, और ये जो लाइन है दिस हैज बीन कंसिडर्ड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, and the line is parallel to the another side. Okay, if the case is so, then this line it will bisect the third side of the triangle. Okay, so to prove this result, let us first of all make its figure. So हम सोल्यूशन में यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाएंगे. अब देख लीजिए फिगर कैसे बनेगी. हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ABC.
Okay, let this be the triangle ABC. Now in this triangle ABC we will consider a line. हम एक line draw करेंगे through the midpoint of one side, through the midpoint of one side, and let us suppose that वो जो line यहाँ पर हम draw करेंगे, let us suppose that the line is for example PQ. Okay, let's suppose that the line is PQ. और हम ये कहेंगे कि भाई ये जो लाइन हमारे पास है PQ, this has been drawn through the midpoint P. This has been drawn through the midpoint P of AB, and this line PQ, it is parallel to what? BC. It is parallel to the another side. Okay. Now what you need to prove? You need to prove that this line PQ, it bisects the third side. Means this line PQ, it should bisect what? AC. It should bisect AC. That means what? That means this Q, it is the midpoint of what? AC. This means you have to prove this. AQ equals what? तो अगर आप ये प्रूव कर पाते हो AQ is equal to what? QC. This means that you have proved that this PQ, it bisects AC. This bisects AC, and this is actually the result. Okay, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कंसिडर ट्रायंगल ABC. कंसिडर ट्रायंगल ABC. ओके, फिर हम लिखेंगे इन विच लाइन PQ, इन विच कंसिडर ट्रायंगल ABC इन विच line PQ has been drawn, and this line has been drawn through the midpoint P, of AB, means through the midpoint of one side. Okay, so P here, it is the midpoint of AB. This is the given statement. Okay, तो हम लिखेंगे consider triangle ABC in which line PQ has been drawn through midpoint P, midpoint P of AB such that, और ये जो लाइन हमारे पास है PQ, it is what? It is parallel to BC. Okay, this PQ is parallel to BC. Okay, so this is what satisfies our statement. Now we need to prove that this PQ, it bisects the third side, means PQ, it bisects the side AC here. Okay, for that what we will do, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे since देखिए PQ जो मेरे पास है, it is parallel to what? BC. PQ, it is parallel to BC. Once it is parallel to BC, so we may apply what? Basic proportionality theorem. Therefore, by basic proportionality theorem, we have, क्या मिलेगा? We will get this AP divided by PB. This is equal to AQ by QC. Okay, what does that imply? This implies here, देखिए AP by PB, but this AP, it is equal to what? PB. Why? Because this P, it is the midpoint. This has been already assumed that this P is the midpoint of AB. Okay, so we may say that this ratio AP by PB, this is equal to 1, है ना? Because AP is equal to what? PB. So this will cancel out, we will get 1. So this will imply 1 is equal to AQ by QC. So perform cross multiplication, we get AQ equal to what? QC. तो आपको ये मिल रहा है AQ equals QC. Okay, what does that mean? That means this PQ, it bisects what? AC. So which implies PQ bisects AC. So this PQ, it bisects AC. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, this was question number 7. तो अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हो. हम इसको यहाँ पर रब करेंगे एंड वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. ओके डियर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. Now see, this is question number 8 and it is asking that using theorem 6.2. तो आपको यहाँ पर theorem 6.2 यूज करनी है and theorem 6.2 is converse part of basic proportionality theorem. Okay, so using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ओके, तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास एक ट्रायंगल एक है, ओके, और इस ट्रायंगल में आप एक लाइन कंसिडर करते हो एंड द लाइन हैज़ बीन टेकन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, सो इफ दैट इज द केस देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव. ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए सिंपल है. हम सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे. लेट्स कंसिडर ट्रायंगल ABC. Okay,
and let's suppose that this is the line PQ. Okay, और ये जो line मेरे पास है PQ, let us suppose that this line has been obtained by joining the midpoints P and Q of sides AB and AC. ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसिडर ट्रायंगल ABC, कंसिडर triangle ABC in which line PQ is obtained by joining the midpoints, by joining the midpoints P and Q of sides. P is the midpoint of AB, so we may write here of sides AB and AC respectively. Okay, so this is what we have. So in triangle ABC we have a line PQ, and this PQ, this has been obtained by joining the midpoints P and Q of sides AB and AC respectively. Now what we need to prove, we need to prove that this line PQ, it is parallel to the third side, that is this line PQ, it is parallel to BC. Okay, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए this line PQ, this will be parallel to BC only when this PQ divides AB and AC in the same ratio. ओके तो ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू BC, वी विल प्रूव दैट दिस PQ it divides this AB and AC in the same ratio. This means we need to prove this AP divided by PB, this is equal to what, AQ by QC. ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं, दिस मीन्स दैट वी हैव प्रूव्ड अ रिजल्ट. ओके, कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस P is the midpoint, since P is the midpoint of AB, since P it is the midpoint of AB, so we may write here AP is equal to what, AP is equal to PB, let that be first. Okay, तो ये जो हमारे पास है P, this is the midpoint of AB and this will give you this. Okay, अब देख लीजिए Q, this is the midpoint of AC, this means AQ it will be equal to what, QC. Okay, हम लिखेंगे similarly AQ जो मेरे पास है AQ, this is equal to QC, let that be second. Why? Because Q is the midpoint. Okay, the line has been obtained by joining these two midpoints. ठीक है yes? तो देखिए मुझे चाहिए AP by PB, this should be equal to AQ by QC. तो वो आपको कैसे मिलेगा, देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, I will divide them. Okay yes, I will divide them and I will get this AP divided by AQ, this is equal to PB divided by QC. Okay, so what does this imply, यहाँ पर हम PB और AQ को आपस में interchange करेंगे and we will get our required result. So this will be like this, AP divided by PB, AP by PB, this is equal to here AQ by QC. Okay, what does this mean, this simply means that this line PQ it divides AB and AC in the same ratio. Once it divides them in the same ratio, so it will be parallel to the third side. So this PQ it will be parallel to BC. So which implies हम यहाँ पर directly लिख सकते हैं PQ it is parallel to BC, and here it is true by converse part of basic proportionality theorem. Means we have used here theorem 6.2, converse part of BPT. Okay, तो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल एक है और हमने यहाँ पर एक लाइन ली थी. द लाइन हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. ओके दिस, सो द लाइन देयर इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे एक ट्रायंगल है, लेट दिस बी ट्रायंगल DEF. फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहाँ पर एक लाइन एक ली है, लेट दिस बी फॉर एग्जाम्पल PQ. If this line PQ, it is said that P is the midpoint of DF and Q is the midpoint of EF. Okay, this means this line PQ, this has been obtained by joining the midpoints of the two sides of the triangle. Okay, then this line it will be parallel to the third side. Okay, means PQ यहाँ पर जो है PQ it will be parallel to DE. Okay, so the theorem is true in general. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट में कहा गया है कि भाई ये जो दोनों क्वेश्चन है ये शायद आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़े होंगे, इनको वहाँ पर आपने प्रूव किया होगा.
और वहाँ पर आपने कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स यूज़ किए होंगे इनको प्रूव करने के लिए, और यहाँ पर हमने एक में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई की, एंड इन सेकंड वन वी हैव यूज्ड दिस कन्वर्स पार्ट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, एक्चुअली दिस क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज एक्चुअली द मिड पॉइंट थ्योरम, है ना. यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल एक है, ओके, आप एक लाइन ड्रॉ करते हो बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, okay, then this line it will definitely be parallel to the third side. This result is actually called the midpoint theorem. Okay, मुझे लगता है क्लास 9th में as midpoint theorem वहाँ पर ये फ्रेम की हुई होगी, तो आप वहाँ पर भी देखिए. तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, तो आप इसको नोट कीजिए. हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है. सो हियर वी विल रैप इट. Now see, this is question number 9, and here we are being asked that ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, okay, and its diagonals intersect each other at point O. So we are being asked to show that AO over BO this is equal to CO over DO, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ रिगार्डिंग ट्रेपेजियम, और आपको पता होगा कि भाई ये जो ट्रेपेजियम्स होते हैं दे आर एक्चुअली द क्वाड्रेटर्स हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ओके. और यहाँ पर जो हम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल ले रहे हैं दैट इज बीइंग गिवन हियर, ओके. तो इस ट्रेपेजियम में आपके पास जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ए बी एंड डी सी, सो दिस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है, ठीक है. तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और अकॉर्डिंगली देखेंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है हम वहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, है ना. तो ठीक है, सॉल्यूशन पे आइए आप. देखिए ट्रेपेजियम बनाना है, और ये जो ट्रेपेजियम है हियर यू हैव टू कंसीडर ए बी पैरेलल टू डी सी, मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, एंड द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स व्हिच इज पैरेलल इज दिस, ठीक है. सो मेक दिस ट्रेपेजियम, सो द ट्रेपेजियम विल बी लाइक दिस. फॉर एग्जांपल लेट दिस बी ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है. तो यहाँ पर जो है वी आर कंसिडरिंग दैट ए बी इट इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है. अब ये जो डायगोनल्स हमारे पास है, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओके. नाउ जॉइन दिस डायगोनल्स, सो वी हैव डायगोनल ए सी हियर, वी हैव डायगोनल बी डी, फॉर एग्जांपल दिस, एंड तो ये जो यहाँ पर है दीज डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है. आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दिस AO over BO, means this AO over BO this is equal to what, CO over what, DO, ठीक है. तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए सॉल्यूशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर हमें कॉन्स्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हम यहाँ पर एक लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ओके. वी विल टेक अ लाइन विच विल पास थ्रू दिस point of intersection of the diagonals, okay, and the line will be considered to be parallel to side AB, for example, ठीक है. So the line will be for example like this. So we will consider a line through point O. Let this line be for example EF, okay, and this EF it will be considered to be parallel to for example AB, ठीक है. So we will write in the solution. First of all we will write given trapezium ABCD, given trapezium ABCD in which AB जो मेरे पास है this is parallel to DC, okay. So AB it is parallel to DC, ठीक है, and its diagonals intersect each other at point O. So we will write here whose diagonals intersect each other at point O, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ वी नीड टू प्रूव दिस, ओके. सो टू प्रूव दिस वी हैव कंसिडर्ड अ लाइन थ्रू पॉइंट O, ओके, एंड दिस लाइन इट विल बी एज्यूम्ड टू बी पैरेलल टू साइड AB, फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर द लाइन EF. मैं यहाँ पर लाइन क्या कंसिडर कर रहा हूँ EF, ओके, बट दिस इज थ्रू पॉइंट O. सो आई विल राइट हियर consider the line EF through point O, such that this line EF it is parallel to AB, okay. So I will write here such that this EF it is parallel to AB.
Now look here, if this line EF is parallel to AB, this means that this line EF, it will be parallel to DC, है ना? Why? Because AB is parallel to DC. Okay, so if this line is parallel to this, but this line AB, it is parallel to DC, this means that definitely our line EF, it will be parallel to DC. So ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लेटर ऑन चाहिए, है ना? तो देखिए अब हम क्या करेंगे. We will consider triangle ADB, okay, and in this triangle ABD we may apply basic proportionality theorem. कैसे हम वहाँ पर basic proportionality theorem apply करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए, है ना? So I will write here in triangle ABD, okay. So देखिए ये जो ट्रायंगल हमारे पास है ABD, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई मेरे पास जो ये EO लाइन है, EO it will be parallel to what? AB. मैं यहाँ पर लिखूंगा in triangle ABD we have what? We have EO, this will be parallel to AB. ठीक है, yes, EO it will be parallel to AB. कैसे पैरेलल होगी? देखिए हमारे पास जो लाइन EF है, EF it is parallel to AB. यहाँ पर देख लीजिए आप, EF it is parallel to AB. ओके, अब ये जो मेरे पास EO है, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सेम लाइन. ओके, दिस EO it is actually the part of the line EF. Okay, once EF is parallel to AB, this means definitely this EO it will be parallel to AB, and that is what I have written here. EO it is parallel to AB. Now apply basic proportionality theorem. So we may write here therefore by basic proportionality theorem, basic proportionality, therefore by basic proportionality theorem we have, देखिए क्या मिलेगा, EO it is parallel to AB. This means that this line EO it will divide AD and BD in the same ratio. जरा ratio ले लीजिए आप. So we will get here this DE over EA, this will be equal to DO over what? OB. Okay, let that be for example first. ये यहाँ पर मैं first लेता हूँ, ठीक है. अब देख लीजिए यहाँ पर अब हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ADC, ठीक है डियर्स. और इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि भाई मेरे पास जो लाइन EO है, दिस EO इट इज पैरेलल टू DC, है ना. देखिए EO इट इज पैरेलल टू AB, okay, but AB is parallel to DC. This means EO it will be parallel to what? DC. Okay, so we may write in triangle ADC EO is parallel to what? DC. ठीक है ना. तो लिख लीजिए. Now in triangle ADC we have, हमारे पास क्या है? We have EO it will be parallel to DC. EO is parallel to DC. Once EO is parallel to DC, so this EO it will divide AD and AC in the same ratio. So write down here, हम लिखेंगे therefore by basic proportionality theorem, by basic proportionality theorem क्या we have. देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे. So we will get here this AE over ED, AE over ED, this will be equal to what? AO over OC. So this is equal to AO over what? OC. ठीक है. ज़रा आप फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे जो मेरे पास है, मेरे पास यहाँ पर एक रेशो जो है वो सेम मिलेगा. वो कौन सा रेशो होगा? दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल दिस. देखिए यहाँ पर मेरे पास है AE ओवर ED, यहाँ पर क्या है? DE ओवर EA. तो ये तो सिंपल बात है, यहाँ पर हम इस रेशियो का रेसिप्रोकल लेंगे. सो आई विल गेट एग्जैक्टली फर्स्ट, ठीक है. तो रेसिप्रोकल कीजिए यहाँ पे. सो दिस विल एम्प्लॉय ED डिवाइडेड बाय AE, दिस इज इक्वल टू हियर OC डिवाइडेड बाय AO. लेट दैट बी फॉर एग्जाम्पल व्हाट? लेट दैट बी सेकंड, ठीक है. अब देख लीजिए, अब आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीटली आप इनको कंपेयर कर सकते हैं. देखिए ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है, यहाँ पर आपको एक रेशियो कॉमन मिल रहा है, एंड द कॉमन रेशियो इज दिस, इट इज हियर DE डिवाइड बाई EA. यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ED मीन्स DE, ओके, डिवाइड बाई AE. So it is one of the same. So we may say that left hand side of first and second is same, means definitely right hand side will be same, है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे on comparing equations first and second, comma we get, क्या मिलेगा? देखिए
तो यहाँ पर आपको मिल रहा है दिस DO over what? OB. So it is DO over OB. This will be equal to OC divided by AO. देखिए हमें क्या प्रूव करना था, AO over BO. दिस मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, AO को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे. सो वी विल इंटरचेंज हियर AO एंड DO. सो दिस विल इम्प्लॉय व्हाट? सो यू विल गेट हियर this will be AO divided by this will be OB. So OB can be taken as BO. It is one of the same thing. So that will become AO over BO. This will be equal to here. So it will be here CO over what? D. CO DO. ठीक है. So we have proved our result. So this is what we are being asked to prove. Okay dears. तो यहाँ पर जो है आप इसको नोट कर सकते हो. एंड दिस वाज क्वाइट सिंपल. इसमें हमने थोड़ी सी कॉन्स्ट्रक्शन की. हमने एक लाइन एक ली EF. And this line, it has been assumed to be parallel to AB. Okay, once it is parallel to AB means it is any part will be parallel to AB. Okay, since AB is parallel to DC, okay, means any part of the line EF will be parallel to DC. Okay, बस ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर यूज़ की. मैं यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में गया और वहाँ पर जो है उन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास ये जो साइड AD है वो हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा था और ये जो कॉमन साइड है इसने हमें यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन प्रूव करके दिया है ना. तो आप यहाँ पर इसको नोट करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, विच इज़ एक्चुअली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो वी विल ट्राई टू हैव अ लुक ओवर दैट. नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड वी आर बीइंग आस्क्ड दैट द डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO over BO equals what? CO over DO and you are being asked to show that ABCD is a ट्रेपिज्म. आपको यहाँ पर जो है दिखाना है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक्चुअल में एक ट्रेपिज्म है ना. अब भाई देख लीजिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, दिस इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या दिया गया था? आपके पास वहाँ पर एक ट्रेपिज्म दिया गया था. ओके, ट्रेपिज्म ABCD इन विच AB वाज पैरेलल टू DC. ओके, और वहाँ पर जो डायगोनल्स है दे वर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू शो दैट AO ओवर BO इक्वल्स व्हाट? CO ओवर DO है ना. सो दिस वाज देयर अबाउट टू प्रूव. नाउ यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर जो है दिस कंडीशन इज गिवन टू अस. दिस कंडीशन इज गिवन टू अस इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ओके, एंड बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन यू हैव टू शो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज एक्चुअली ट्रेपिज्म है ना. भाई कैसे प्रूव करेंगे कि हम भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपिज्म है? देखिए एज ऑलरेडी टोल्ड यू जो ये ट्रेपिज्म्स होते हैं देयर वी हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हम प्रूव करेंगे कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इट इज सच दैट इट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल. ओके, तो जब हम वो प्रूव करेंगे तो हम वहाँ पर उसके बेसिस पे कहेंगे कि भाई वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअली एक ट्रेपिज्म है. ठीक है डियर, आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे. देखिए मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए कैसे बना लेता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल ABCD. दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD. ओके, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ओके, सो जॉइन दिस डायगोनल्स. So this is the diagonal and this is the another diagonal, so they intersect each other at point O. ठीक है, अब अगर ये intersect करते हैं this means that they intersect such that this thing is true. AO over BO equals what? CO over DO means they satisfy this. तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपिज्म है. ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इस क्वाड्रिलेटरल में प्रूव करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है. ओके, एंड वी विल शो दैट दिस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स AB and DC they are parallel. Okay, this means we need to show simply this AB it is parallel to DC. If we are successful in proving this AB parallel to DC, this means we have proved that in this quadrilateral one pair of opposite sides is parallel, means this quadrilateral it will be a trapezium. Okay, so we will just prove that AB is parallel to DC. ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको. ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ खास बात तो नहीं है. देखिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, we will consider the solution. हम लिखेंगे given quadrilateral ABCD, given quadrilateral
given quadrilateral ABCD whose diagonals intersect each other at point O. Okay, because this is given at point O. Okay, so the diagonals, they intersect each other at point O. Now see, they intersect each other at point O, and they satisfy this AO over BO. AO over BO, this is equal to what? CO over what? DO. है ना? So we will write here, side that this AO over what? This BO is equal to CO over D. Okay, so this is what is given to us. Now we need to show that this quadrilateral, it is a trapezium, है ना? देखिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे. We will consider the line, for example, this will be drawn through point O, or we may say that this has been drawn from point O, and the line is OE here. Okay, so we will consider the line OE, and this line OE, we will assume that it is parallel to AB. Okay, you may take it parallel to DC. तो वहां पर भी आपका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा. तो एक साइड को पैरेलल लेना है ना? हमने यहाँ पर जो आपसे पहले ही कहा कि भाई हम यहाँ पर प्रूव करेंगे AB इज पैरेलल टू DC, है ना? तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे जो हम इन दो साइड्स में से किसी एक साइड को पैरेलल रखेंगे, है ना? सो आई विल कंसिडर लाइन OE विच विल बी एज्यूम्ड पैरेलल टू AB. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रा लाइन OE पैरेलल टू AB. ठीक है, so line OE, it is parallel to AB. Once it is parallel to AB, this means in triangle what? ABD. Okay, ABD, we may apply what? Basic proportionality theorem. Okay, so just do that. तो यहाँ पर हम लिखेंगे now in triangle ABD. Okay, since OE, it is parallel to AB. OE, it is parallel to AB. Therefore, by basic proportionality theorem, जरा बताइए क्या देगा आपको basic proportionality theorem? By basic proportionality theorem, we have what? तो यहाँ पर आपको मिलेगा simply DE over EA. This will be equal to DO over OB, है ना? So यहाँ पर आपको मिलेगा this DE over what? EA. DE over EA, this will be equal to DO over what? OB. Let that be, for example, first. ये यहाँ पर मैं first consider कर रहा हूँ. ठीक है, अब देख लीजिए मेरे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है. मेरे पास जो दिया गया है वो ये है AO over BO, दिस इज इक्वल टू CO over DO. ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी गिवन स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे. हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो AO over BO, दिस इज इक्वल टू व्हाट? CO over व्हाट? DO. ये कहाँ से आपको मिल रहा है? दिस इज एक्चुअली गिवन. तो ये यहाँ पर आपको गिवन है ना? देखिए OE, दिस हैज बीन कंसिडर्ड पैरेलल टू व्हाट? AB. ओके, अब हम ये प्रूव करेंगे कि भाई ये जो OE है, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू DC. ठीक है, सो इट विल बी पैरेलल टू DC. वी विल शो दैट दिस OE, इट इज पैरेलल टू DC. तो अगर हम ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, दिस मीन्स दैट AB, इट विल बी पैरेलल टू DC. तब आपको वहां पर AB जो है वो आपको पैरेलल मिलेगा DC को, है ना? तो ये जो OE यहाँ पर है, टू गेट दिस OE पैरेलल टू DC, व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट दिस OE it divides AD and AC in the same ratio. Means we need to prove this AE over ED, this is equal to AO over what? OC. Okay, तो अगर आपने ये प्रूव किया, this means we may say in triangle ADC, OE divides AD and AC in the same ratio. Once that is true, so we may say that this OE, it is parallel to DC. Once OE, it is parallel to DC, but this OE, it is already parallel to what? AB. This means AB is parallel to DC. Okay, और यही हमें प्रूव करना था. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, हम यहाँ पर ये दिखाएंगे कि भाई ये जो AB है, इट इज पैरेलल टू DC, है ना? तो हम वहाँ पर अपने क्लैम पे आएंगे. ठीक है, तो देख लीजिए ये अब हमें कैसे प्रूव होगा. AE over ED, दिस शुड बी इक्वल AO over OC. देखिए हमारे पास दिस इज फर्स्ट and this one is the given statement,
आप बताइए क्या हम इनको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं? देखिए अभी तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस विल एम्प्लॉय डी ओ को यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे विद ए ओ, सो इट विल बिकम हियर डी ओ और व्हाट बी ओ, दिस विल बी इक्वल टू हियर सी ओ वो व्हाट ए ओ। ठीक है, लेट दिस बी फॉर एग्जांपल सेकंड। ठीक है, अब देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास है, हम इनको डेफिनेटली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। आई नीड दिस ए यू और ई डी, इट शुड बी इक्वल ए ओ और ओ सी। जरा देखिए so here it is DO over OB, so it is DO over OB, so we may say that the one ratio is common, so use this common ratio, so we may write here on comparing equations first and second comma we get क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर जो है आपको मिलेगा DE और EA, DE over what EA, D over EA, this is equal to this, and this ratio is equal to what CO over AO, so this will be equal to CO over what AO। ठीक है ना, जरा देखिए आपको मिल रहा है I need AE over ED, so इसको रेसिप्रोकल करेंगे, this will imply EA जो है इसको हम लिख सकते हैं AE over this D, this can be taken as ED, so this is equal to here AO over what CO, this is this। देखिए डायरेक्टली आपको ये मिल रहा है। ओके, एंड व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस मीन्स EO divides AD and AC in the same ratio, so when we consider triangle ADC, this EO it will be parallel to DC, so we will write here directly this will imply this EO it is parallel to what EO it is parallel to DC। तो EO जो मेरे पास है ये आपको DC को पैरेलल मिल रहा है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये जो रिजल्ट है दिस इज ट्रू बाय दिस कन्वर्स part of basic proportionality theorem। ठीक है, so EO is parallel to DC। हम यहाँ पर लिखेंगे but मेरे पास जो EO है this has been assumed initially to be parallel to what AB, but EO is parallel to AB, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए EO this has been considered to be parallel to AB। देखिए ओके, सो once EO is parallel to AB, यहाँ पर आपको मिल रहा है EO parallel to DC, this will definitely imply what AB it is parallel to, this will imply AB is parallel to DC, so AB it is parallel to DC। this means that ये जो हमारे पास यहाँ पर quadrilateral है this is such that it is one pair of opposite sides is parallel, so we may directly say that this quadrilateral is a trapezium। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम last में which implies quadrilateral ABCD quadrilateral ABCD is a trapezium। ठीक है डियर्स, तो आप यहाँ पर ये खुद भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर हमें प्रूव करना था वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है डियर्स, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली बोथ द क्वेश्चन आर एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो आप इसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, और थोड़ी सी कॉन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है रिजल्ट जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 6.2, और जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, सो वी विल अकॉर्डिंगली कम टू दैट इन अवर अपकमिंग लेक्चर्स। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू मे डेफिनेटली आस्क। ठीक है, यस, सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच।